Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss in the Bank Branch Audit MOC, Memorandum of Changes, and the practical aspects in preparing various MOC. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon, so that whenever we upload new video, you will get it notified. So, Memorandum of Changes. In our previous video, we had discussed about the overview of Bank Branch Audit. Then we had discussed in another video regarding the audit planning and audit program. Then in another video, we had discussed about the audit of advances, and then IRAC norms, and then agriculture advances and LAFAR. So if you missed that video, please visit to CA Sansaar YouTube channel and you can check it out from the CA Sansaar YouTube channel, and we will also try to put the link into the iBox itself. And after the previous video, we have received many requests regarding the recording of a video on MOC, Memorandum of Changes, either in the messages or the mails. So today we will discuss on the MOC. So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be considered the views of the ICAI, CA Sansaar, or any other person or any other authority. And please don't take as the legal or the professional advice or the legal or professional opinion. And the purpose of this video is to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as the solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And please also refer ICAI guidance note, RBI master circular, RBI master direction, notification, circular, and the bank policy. So in the bank audit, bank branch audit, as a auditor, we have to issue the independent audit report, and the MOC, Memorandum of Changes, is also the part of the audit report. So audit report जो हमें issue करने is as per the SA 700 revised issued by the ICAI or some other format as per the any regulatory authority. तो MOC तो हमें issue करना, MOC तो is the part of audit report, either it's the nil MOC or you have issued any MOC. So this is the part of the audit report. Then MOC है क्या? MOC means once we completed the audit, and अगर हमने MOC का नाम ही ले लिया, so it's like a earthquake in the branch. Everybody will come, MOC क्या हो गया, क्या नहीं हो गया. So MOC is the very important document for the bank branch audit purpose, even all bank audit purpose. So wherever we observe as a auditor, if we observe कि some significant changes are there in the financial statements of the bank, then what to do? It's not like that the other audit कि हम account audit कर रहे हैं, then we gave the for the rectification entry and then finalize the accounts. It's not like that. Banks के जो accounts हैं, they are freezed on 31st March. जो banks के financials हैं, it's freezed on the 31st March, and then we start the audit. And then if we observe, if there are some changes, some modification into the profit and loss account, balance sheet, then we can do only through the Memorandum of Changes. We have to issue the MOC to address the CSA, Central Statutory Auditor, and then CSA of that zone, they will include it of the different consolidated of the different individual branches. So MOC is just like a rectification entry. एक rectification entry है. If we observe कि हमें लगता है कि if there are some error, omission, classification, provisions, then we can issue the MOC. And MOC में we are disagree with the branch itself agar as a auditor, then and if there are some mistakes, some error, then we can in the financial or the classification, then we can issue the MOC itself. And then MOC can be in three parts: MOC Format 1, MOC 2, and MOC 3. So if you are issuing a MOC, तो आपको देखना है कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है MOC, कौन सा MOC 1, MOC 2 और MOC 3. सो जो मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस है MOC 1, if it's related to the balance sheet as at
and the profit and loss target, profit and loss accounts for the year ended. तो उस केसेस में इट्स द MOC 1, and if the MOC related to classification of advances, so please आप IRAC norms का वीडियो चेक कर लीजिएगा, where we had discussed about the classification of advances as per IRAC norms. So अगर कुछ changes है in our audit, like some classification from standard to NPA, कोई account standard है as per the branch and we did NPA, then MOC 2, or NPA to standard, vice versa कि NPA था but it's all the amount received and recovery होगी as per its standard account, or NPA to NPA कि substandard to doubtful D1, D2, D3, then MOC 2, and in third MOC 3 case, MOC related to the classification of advances under standard category कि आपका स्टैंडर्ड कैटेगरीज है, इट्स नॉट एनपीए, लाइक SMA अकाउंट्स, SMA 0, SMA 1, SMA 1 to 2, SMA 2 to SMA 1. तो if there are some mistakes are there, तो we have to issue MOC 3. So MOC 1, MOC 2 and MOC 3. Clear? Then some important points like the nature of MOC, Memorandum of Changes. किस हेड में चेंजेस हो सकते हैं, then we have to issue the MOC, like modification in the balance sheet. If there are some modification, हमें लगता है कि कुछ assets या liabilities में कुछ changes है, that MOC issue करना पड़ेगा. Then modification in the profit and loss कि interest कम charge, extra charge, revenue leakage etc. तो उस केस में भी हमें MOC issue करना पड़ेगा. Then modification of advance portfolio, like reclassification of advances. In that case also I told you MOC 2 आपको issue करना पड़ेगा. Then relating to the outstanding balances of the advances, yearly return of provisions, revision in the provisions, NPA or other, reversal of the income of newly recognized NPAs, reconciliation balance in interest not collected amount, rectification account in relation to fixed assets. तो these are some natures. इसके अलावा भी कुछ और केसेस हो सकते हैं, we'll also discuss. तो जिसमें you have to issue the MOC. तो MOC के केसेस में every bank have their own policy. So please check the closing circular issued by the bank. बैंक issue करता है to the different branches कि आपने पूरा डिटेल में methodology for preparing the MOC. तो you must go through the closing circular. And then second thing, what I told you कि अगर लगता है to the auditor, no, you should have proper documentation. You should have the evidence कि yes, this account we have to issue the MOC. तो रीजन शुड बी देयर, आपके पास प्रॉपर रीजन होने चाहिए. एंड देन MOC फॉर द चेंजेस रिकमेंडेड बाय द स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर कंसीडर्ड बाय द बैंक, वो वही है कि पहले आप मैनेजमेंट को इशू करोगे, बैंक मैनेजमेंट को, देन दे विल फॉरवर्ड इट टू द जोनल ऑफिस. जोनल ऑफिस में जो आपके सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, दे विल चेक कि क्या उसका इम्पैक्ट है इन द इंक्रीज डिक्रीज एसेट लायबिलिटी बैलेंस, चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, प्रोविजनिंग देयर ऑफ इंक्रीज. तो देन दे विल डू एंड आल्सो विल चेक द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो भी उसकी कैलकुलेशन है, इट्स फॉर द कंप्लीट ब्रांच. हम तो ब्रांच लेवल पे इशू कर रहे हैं, दे विल इशू ऑन द बैंक इटसेल्फ, द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर. देन फॉर्मेट ऑफ द MOC, जो फॉर्मेट ऑफ द MOC है फॉर द डिफरेंट बैंक, इट्स जस्ट लाइक द ट्रायल बैलेंस. मीन्स आपकी बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी टैलिड. एंड जस्टिफिकेशन, यू शुड गिव द क्लियर जस्टिफिकेशन. जो भी आप चेंज कर रहे हो, नेचर ऑफ चेंज, उसमें आपका रीजन क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि व्हाई यू आर इशूइंग दिस MOC. तो उसके ऊपर भी हम अभी डिस्कस करते हैं. देन द total of reclassification of the advances suggested in the secured, unsecured, guarantee advance and sector wise and advances should be correctly brought up in the MOC and total of both sides should be tie up. तो MOC 2 जो आप इशू करोगे regarding the reclassification of the advances as per the IRAC norms, उसमें you have to mention कि जो एडवांसेस है कितना सिक्योर्ड पोजीशन है, कितना अनसिक्योर्ड पोजीशन है, कितना गारंटेड है, देन द प्रायोरिटी वाइज, प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, ऑल डिटेल यू हैव टू मेंशन इनटू द MOC. एंड देन in case of change suggested as per the prudential norms on income recognition, the impact if any on the provisioning of asset is also to be looked into. Then this is the format of MOC 1. MOC 1 क्या हमने डिस्कस किया था, if इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस आइटम. तो MOC में आपको वहाँ पे डिफरेंट बैंक नेम, जो ब्रांच है,
and memorandum of changes related to balance sheet asset and the profit and loss account for the year end, then name of the branch code, name of the zone code, then in debit side and this credit side. आई टोल्ड यू अर्लियर बोथ शुड बी इक्वल। तो उसमें आपको जो कोड है एमसीक्यू, जो बैलेंस शीट का कोड है, देन अकाउंट नंबर, देन हेड ऑफ द अकाउंट, देन कैटेगरी। अकाउंट कैटेगरी मीन्स वेयर द इफेक्ट इज देयर। ई स्टैंड फॉर एक्सपेंडिचर, आई स्टैंड फॉर इनकम, ए स्टैंड फॉर एसेट्स, एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज। सो इफ देयर आर सम चेंज तो अमाउंट। एंड देन इन क्रेडिट साइड एमसीक्यू कोड, जो क्रेडिट साइड में अकाउंट नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंट साइड, एंड देन अकाउंट कैटेगरी एंड अमाउंट। एंड देन नेक्स्ट रीजन ऑफ एमओसी, कि क्या रीजन है। देन बैच नंबर, डेट ऑफ पासिंग एमओसी एट द ब्रांच, वो आपको मेंशन करना है। एंड देन प्लेस, डेट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सिग्नेचर, ब्रांच हेड सिग्नेचर, इसके ऊपर भी अभी हम डिस्कस करते हैं। देन दिस इज फॉर्मेट ऑफ द MOC2, MOC2 which we had discussed regarding the classification of advances। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस में भी क्या नेम ऑफ द ब्रांच है, क्या कोड है, एंड देन इसमें वी हैव टू फिल द डिटेल, व्हाट्स द व्यू पॉइंट ऑफ द ब्रांच, एज पर ब्रांच क्या डिटेल है, और एज पर ऑडिटर मींस इफ branch is saying this is D1 account and we are saying no, this is D2 account, so as per branch view detail we have to mention, as per auditor detail we have to mention, and then आपको उसमें amounts इसमें details into different column you have to mention, like then even जब NPA हो जाएगा आपको देखना है कि व्हाट्स द अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट अमाउंट, वो भी आपको मेंशन करना है। अनरियलाइज्ड अमाउंट उसमें कि लास्ट ईयर तक कितना अनरियलाइज्ड अमाउंट था एंड ड्यूरिंग द ईयर कितना अनरियलाइज्ड अमाउंट है, कितना टोटल अमाउंट है। देन इफ दैट पर्सन हैव सम अदर फैसिलिटी आल्सो, लाइक ओडी अकाउंट है या फिर उनका टर्म लोन है, उनकी भी डिटेल आपको मेंशन करनी है। देन सिक्योरिटी वाइज क्या सिक्योरिटी है उसकी, कवर्ड, secured, unsecured, and then also whether it's the priority sector, not priority sector, then provisioning, अगर कोई provisioning बनाई है पहले वो कितनी है। तो all these detail you have to mention into the MOC2 in case it's the classification of advances। Then this is the format of MOC3। MOC3 के केसेस में भी बैंक नेम, आपका जो भी बैंक नेम है, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड देन हियर आल्सो यू हैव टू मेंशन एज पर ब्रांच। MOC3 किस केस में हमको इशू करना है, इफ चेंजेस इन स्टैंडर्ड वाइज मींस स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड, SMA अकाउंट्स में अगर कुछ चेंजेस है दैट यू हैव टू इशू। तो सेम हेयर आपको एनुअल स्टेटमेंट आपको डिटेल देनी है, देन लोन अकाउंट्स की डिटेल, एसेट्स कैटेगरी की डिटेल, एंड देन पार्टी कोड, नेम ऑफ द बोरोवर, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, कुछ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वैल्यू, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन फैसिलिटी वाइज कुछ और अकाउंट है, दे हैव लाइक द बिल परचेज, ओडी अकाउंट, टर्म लोन अकाउंट, देन secured in this another account secured by cash deposit others। तो here also you have to provide the detail, and in down आपको साइन ऑडिटर एंड द ब्रांच मैनेजर। दिस इज द केस ऑफ द फॉर्मेट ऑफ MOC3। देन जो MOC आप प्रिपेयर करोगे अदर से 1, 2 और 3, it should be into the corrected account heads and code and also corrected amount, because even as a CSA, Central Statutory Auditor, CSA had observed कि in most of the cases, in काफी many cases, I can't say most of the cases, in many cases, MOC is not corrected issue, कि उसमें कई बार कोड गलत है या both sides are not equal। So as a auditor, as a branch auditor, we should see the correct account head, correct account code, correct amount, and so that whenever central statutory auditor they are consolidated, they don't have any issue। otherwise क्या होगा, they will call you and will ask the explanation कि ये कैसे है, आपने ये इशू कर दिया, इसकी डिटेल नहीं है। so also you must have the reason, जो रीजन है तो वैलिड रीजन शुड बी देयर एंड आल्सो शुड बी इनटू द MOC में भी आपका, एंड इट शुड बी द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड आल्सो काउंटर साइन ऑफ द बैंक मैनेजर रिक्वायर्ड है। और बाय चांस अगर वो नहीं करते, you should ask them to do it, otherwise counter sign is not compulsory, no need of that, but yes, if they do then it's very good, otherwise you can also refer to the CSA। and then if there is no entry, I told you earlier
MOC is the part of the audit report. चाहे आप MOC इश्यू करो या ना, means if there are no some significant changes are there, if you don't think there are some MOC, तो you can write the nil MOC. तो आपको नील एमओसी मेंशन करना पड़ेगा अपनी एनओसी में कि कोई एमओसी इज नॉट देयर. एंड देन सम पॉइंट जब आप एमओसी इशू कर रहे हो, यू शुड हैव दीज पॉइंट इन योर माइंड. फर्स्ट थिंग कि अगर आप एमओसी इशू कर रहे हो, बाई चांस इट्स फॉर द एनपीए, then you must know the how to calculate the unrealized interest, because we had already discussed at the time of IRAC norms that if one accounts become NPA, then all unrealized interest जो past years का भी है should be reversed. तो you should have the calculation of the unrealized interest. जिस डेट को NPA है उससे पहले का सारा इंटरेस्ट जितना भी unrealized है, it should be reversed. तो you must have the calculation. Then second, we had discussed the reason of MOC. जो रीजन है इट शुड बी क्लियरली मेंशन इनटू द एमओसी. एंड देन सिक्योर्ड पोर्शन एंड द अनसिक्योर्ड पोर्शन, बिकॉज प्रोविजनिंग आर बेस्ड ऑन दैट कि आपका कितना सिक्योर्ड पोर्शन है, कितना अनसिक्योर्ड पोर्शन है. देन यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द आईरैक नॉर्म्स. तो आईरैक नॉर्म्स की नॉलेज नहीं है तो यू कांट इशू द एमओसी, बहुत डिफिकल्ट है. सो माई रिक्वेस्ट टू यू, आप आईरैक नॉर्म्स के ऊपर आरबीआई का सर्कुलर है इस दिस ईयर आल्सो दे हैड इशूड द 3 सर्कुलर, तो आप CA संसार पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हो आईरैक नॉर्म्स पे. देन इवन यू कैन आल्सो गो थ्रू द सर्कुलर आल्सो. देन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एमओसी फॉर्म. एमओसी फॉर्म में भी कई बार सम मिस्टेक्स आर देयर कि वेदर एमओसी 1 टू बी इशूड और एमओसी 2 टू बी इशूड या 3 टू बी इशूड. 2 और 3 में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो दैट यू हैव टू सी. देन यूज कोड व्हाइल पासिंग मैनुअल और एमओसी, तो आपको प्रॉपर कोड यूज करने हैं. देन रिव्यू ऑफ द डेट ऑफ एनपीए. Date of NPA is very, very important. Even RBI had said so many times that bank branch auditors जो NPAs है वो हमेशा 31 मार्च को भी इशू करते हैं, बट नो, इट्स नॉट लाइक द डेट. ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि डेट ऑफ NPA इट कैन बी एनी डेट इनटू द अप्रैल टू मार्च में कोई भी डेट को अगर NPA हो रहा है, दैट यू हैव टू सी एंड अकॉर्डिंगली ऑन दैट डेट जितना भी आपका इंटरेस्ट रेट है बिफोर दैट वो एनपीए डेट से पहले का दैट बी रिवर्स. तो दिस इज वेरी केयरफुली यू हैव टू चेक द एनपीए डेट. देन द मेंशन द फैसिलिटी वाइज डिटेल ऑफ सीसी, मींस इफ वन अकाउंट इज एनपीए तो आपको बाकी अकाउंट्स की भी डिटेल मेंशन करनी है. आपका कौन सा उसका सीसी अकाउंट है या ओडी अकाउंट है, टर्म लोन अकाउंट है, दैट आल्सो यू हैव टू मेंशन. और उसके लिए भी आपको एमओसी इशू करना पड़ेगा, दैट विल आल्सो डिस्कस. देन वर्किंग पेपर शुड बी डॉक्यूमेंट. वर्किंग पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. So you have to save yourself also. You must have the working paper so that whenever the some senior or some CSA they ask the reason, yeah, what the working paper you have, you can go through the working paper, this one documentation. Then summary of MOC in audit report. जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर हमें समरी मेंशन करनी है कि कितने टोटल एमओसीज हैं, क्या इफेक्ट पड़ा है उसका डेबिट में, क्रेडिट में, दैट वी हैव टू गिव एज ए समरी. उसके ऊपर भी मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, दैट्स द सेम फॉर्मेट. एंड देन इफ वन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, देन टेक अकाउंट ऑफ सेम बोरोवर एज द एमओसी. कि वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि दिस एनपीए इज द बोरोवर वाइज, नोट द फैसिलिटी वाइज. तो अगर एक अकाउंट बोरोवर का एनपीए हो गया, देन ऑल द अकाउंट्स आर एनपीए. तो वी हैव टू चेक उसकी कस्ट आईडी से कि और कौन कौन सी फैसिलिटी उन्होंने एनरोल कर रखे इन द सेम बैंक. देन वी कैन गो थ्रू द एमओसी की बाकी अकाउंट भी एनपीएस है. देन दिस इज द समरी जो हमें ऑडिट रिपोर्ट में इशू करनी है. द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस सबमिटेड बाय अस टू द ब्रांच मैनेजमेंट. उसमें दिस इज द पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. देन वी हैव टू सी in respect of income, expenditure, assets, liabilities, gross NPA, classification of advance, risk weighted assets और other items. उसमें हमें देखना है कि कितना इंक्रीज है, कितना डिक्रीज है, टोटल नंबर ऑफ कितनी एमओसीज है, 1 2 3 4 5 कितनी नंबर ऑफ आइटम्स है, रुपीस कितना टोटल अमाउंट है इंक्रीज में, एंड सेम एज केस द डिक्रीज. That we have to mention in our audit report, that because MOC is a part of the audit report and we have to give the summary. हमें उसकी summary देनी पड़ेगी of the MOC. So these are the cases where MOC is required. Might be some other are there. So this you can say as an example I am discussing with you, like the reclassification of assets. कि अगर reclassification assets की है, then we have to issue the MOC. Reclassification on the standard category.
स्टैंडर्ड कैटेगरी मीन्स SMA 0, 1, 2, उस केस में आपको MOC 3. चेंज इन NPA डेट कि इफ यू थिंक कि ब्रांच ने NPA डेट गलत मेंशन करी है, देयर आर सम डिफरेंट डेट, देन आल्सो we have to issue the NPA. Then change in respect of NPA amount में कुछ difference है, then also MOC issue करना पड़ेगा. Erosion in the value of security, जो सिक्योरिटी की वैल्यू है उसमें इरोजन है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. मोर देन 50% है, देन इट विल गोज टू द डाउटफुल एसेट्स. मोर देन 10% है जो सिक्योरिटी डाउन हो गई है इससे ज्यादा, देन इट्स द लॉस एसेट्स. देन इन दैट केस आल्सो वी हैव टू इशू द MOC. एंड फ्रॉड अकाउंट, फ्रॉड के जितने भी अकाउंट्स हैं, दैट्स द लॉस एसेट्स, उस केस में भी हम MOC इशू करना पड़ेगा. ओल्ड स्टेटमेंट अकाउंट, स्टेटमेंट में वी हैव डिस्कस इन केस ऑफ लार्ज बोरोवर 3 months ओल्ड प्लस 90 days उससे ज्यादा है तो इट्स द NPA अकाउंट, उस केस में भी आपको MOC इशू करना पड़ेगा. देन रिव्यू रिन्यूअल अकाउंट कि रिन्यूअल नोट विद इन 180 days फ्रॉम द ओरिजिनल सैंक्शन डेट अगर नहीं है, रिन्यू नोट एडॉक्स आर द शॉर्ट रिन्यूअल. देन आल्सो NPA अकाउंट तो भी आपको MOC इशू करना पड़ेगा. रेवेन्यू लीकेज है तो भी आपको MOC इशू करना पड़ेगा. एंड देन change in the value of assets liability, then also we have to issue the MOC. Change in value of provisioning, then also we have to issue the MOC. So this is some detail regarding the MOC, Memorandum of Changes. So my request to all of you, please go through the IRAC norms. जितने भी IRAC norms हैं उसको आप check करिए. Then can only you will issue the correct MOC. So this is all about for today, and in our next video we will discuss about the Finacle or the some CBS commands, because we have received many requests ki there should be some video on the Finacle or the TCS banks commands. So we are trying कि अगर बना पाए जल्दी से जल्दी. And one another video is also there on the घोष जलानी कमेटी, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे. So till then, bye bye, take care, thank you very much.